चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो हमें चाहिए 2 2/3 cups plain flour, 6 tablespoons melted butter, 6 tablespoons vegetable oil, 2 teaspoons vanilla extract, 3 teaspoons baking powder and half a teaspoon salt, 2 large eggs, some lemon juice, 2/3 cups milk. We have 1 cup of white sugar and 1.5 cup of blueberries. पहले ये जो हमारा लेमन जूस है हम अपने दूध या मिल्क में मिला लेंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। इसके बाद हम अपना बेकिंग सोडा और सॉल्ट अपने फ्लावर में मिक्स कर देंगे। So just want to give this a mix. अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम अपनी ब्लूबेरीज भी ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। ब्लूबेरीज हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसलिए डालते हैं तो जब ये कपकेक्स बेक हो ब्लूबेरीज नीचे ना बैठे कपकेक्स के। नेक्स्ट इन अ लार्ज बाउल हम अपनी शुगर ऐड करेंगे और हम अपना ऑयल ऐड करेंगे, वेजिटेबल ऑयल। इसके बाद हम अपना बटर ऐड करेंगे, मेल्टेड बटर जो हमने माइक्रोवेव में डाला था। अब हम इसे विस्क कर देंगे अच्छी तरीके से तो हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए। ये देखिए अब हमारी इंग्रेडिएंट्स सही तरह से मिक्स हो गया। Now we're gonna add our 2 large eggs. अब हम 2 teaspoons वनीला एक्सट्रैक्ट भी ऐड करेंगे इसमें। अब इससे अपने अंडे और वनीला एक्सट्रैक्ट को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये अब हमारी सारी वेट इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो गई है। Okay, we're now gonna combine our dry ingredients with our wet ingredients. So slowly हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें और फिर अपने स्पैचुला के साथ हम अपनी wet ingredients फोल्ड कर लेंगे। You can see I've nearly combined all the dry ingredients with my wet ingredients, so I'm just adding the last bits in और हम इसे फोल्ड कर लेंगे। Our milk looks like this now. क्योंकि हमने जब अपना लेमन ऐड कर लिया था दूध में तो हमारा बटर मिल्क बन गया था। अब हम अपने मिक्सचर में इसको एंड में ऐड करेंगे स्लोली बाय स्लोली और we're just gonna all mix this together. अब हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए और like this is gonna make us about 12 cupcakes and it's a great recipe, so please do give it a try. We're now gonna put our mixture in a piping bag. We're just gonna scoop some of it and put it all in a piping bag so when we put it in our cupcake tins it's all neat and evenly distributed. अब हम अपना मिक्सचर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने कपकेक लाइनर्स में।
We're now gonna bake the cupcakes for about 30 minutes. Blueberry muffins कैसे बने हैं? वीडियो बहुत अच्छा लगा है भाई, बहुत टेस्टी है. Please like the video, subscribe, and you know what to do. Share.